Good afternoon to all of our wonderful educators over here. And today there is very golden opportunity for all of us, and we all are conjoined over here to get educate on very beautiful topic, right? That is multiple intelligence. And for that, the person we have is truly is the person from wisdom. So we can call him as a person of great wisdom. And if I talk about his qualification, he is MA, BA, and also he is having multiple experiences in his life, right? Being a very good tutor as well as trainer. So if I talk about his training part, right, and his work experiences, so he is from some industries and we call MNC industries. As he worked as a vice excellent trainer in Wipro. I believe you all are aware with Wipro. That is no honor of this organization as Ajit Prem. And also he is having experiences as resource person, being a trainer over there in Gentech Infosoft. So Gentech Infosoft, as you are aware with this company, he provides IT services. He provides IT services in different service industries, right? Like automobile sectors and FMCG industries, manufacturing industries, technologies, insurance, and also he involves in hospitality. So these areas require much patience, right, to deal with their customers, their employees, how they train them to be exist into the market. And the person who is going to train to us from his wisdom of knowledge over here, he goes over there as trainer. He trained many in his life. It is no very golden opportunity for we people, and I can show our gratitude to the person who is going to train us on such topic. So before I call him over here to share his knowledge on this part, I would like to call our STNC, Mr. Vinit Singh, who will introduce you this topic, and then he will proceed with this. Thank you. Very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Today's topic, multiple intelligence. You know very well what is the meaning of multiple intelligence. Everyone has unique and special intelligence. But today I am not going to ask anything more. I would like to Principal sir to discuss over this topic. Please welcome sir. Thank you very much. Warm good afternoon to all the mentors of the alma mater of Guru Gyan University. We are happy that we once again assembled over here to attend the offline training over here, and you all are waiting patiently as we have so far covered a few training, and you were such a great mentors of this school that who had listened so patiently. Not only this, you are following this pedagogy and methodology in our school very smoothly. So thank you once again, and a warm welcome to all of the faculties of Guru Gyan University. I am very happy to know that, that we all assembled over here for our own teaching and learning process related to CBSE. I am really thankful to CBSE Patna, RO Patna also, who has provided so ample
opportunity to all of us to learn something and transfer the knowledge, especially method and pedagogy, from one person to another. So before the session, as you already came to know from the STMC of the school, Mr. Vinit Kumar Singh, the topic is multiple intelligence. So before proceeding to the topic, we are going to discuss some another thing. Then we shall proceed to the topic. First of all, I would like to know what is intelligence. We are talking about the multiple intelligence, but we have to see what is intelligence. In Hindi, we generally used to say buddhi or aklaman. We used to say, but what is it really? Who is called an intelligent person? Or whom do you regard as intelligent student in your class? The student who is very good at study is called an intelligent person or intelligent student, or the student who has a good IQ is called an intelligent person. So these are the things we shall start from here. I would like to tell you, as we have a different teaching methods and ideology which we adopt in our day-to-day life in our classrooms. As we have different strategy of teaching method, in the same way students used to learn in different or diverse ways. That we have to understand. If our teaching method should be unitary one-sided teaching methodology, then what will ultimately happen? Then the student will not get place to understand, or it will be far beyond their understanding level. That's why we are going to proceed or share our ideas, transfer our ideas over here about multiple intelligence. Now, our dear teachers or mentors, I would like to tell you, as we have a different strategy and methodology to teach or conduct the classes successfully, in the same way the students have a different level of understanding, and each student's understanding vary from one another. They couldn't understand in the same way as we used to teach. If we believe that our lecture method and chalk writing with the chalk on the blackboard is sufficient to teach in the classroom and we shall be successful, then definitely we are lagging behind in the 21st century. We have to understand and know the skill. First we have to understand the skill, then we have to imply that different skills in our teaching and imparting system. Then only we shall understand what is the teaching and learning process. Because this topic is very important, not only for the student's point of view, but our teacher points of view. That we are going to start, and definitely I hope it will be a fruitful and informative session to each and everyone, because it is such a session where all the intellectual mentors are over here and they will share their own views and ideas in front of us, and that transferring ideas will be really useful and fruitful in the 21st century. So first I would like to tell you what is intelligence. Generally the word intelligence is derived from Latin word. It means to understand.
it becomes less common in English language previously, and it has not got such a position in psychology, but slowly and gradually it had occupied the place in the field of psychology. So the word intelligence means to understand it. If we see the etymology of the word, then we shall find out that the word has derived from the Latin word. We used to say intelligentsia. We can say intelligentsia. Before that, previously all other intellectuals had one sort of belief that intelligence is the same and it has not varied from student to student, person to person. This was a belief everywhere. It's sort of a belief that every student has the same intelligence and it will not be varied from student to student. This sort of concept the scholars had given, but I would like to tell about the Walter Dearborn. Walter Dearborn's his time was 1718 to 1953. He was an American, and he has given the idea, or he has first given the idea of intelligence. And not only this, he has focuses on the idea of reading skill. He has also given the idea of IQ. So is there anyone out of you? Can you tell me what does the word IQ means? Intelligence Quotient. That's great, sir. Thank you very much. IQ stands for intelligent quotient. So previously it was believed that the student who has good IQ is regarded as intelligent one. The student who is good at study is regarded as intelligent one. But we were just only focusing on the study. We have never focused in different fields. If we think it in a broad way, then you shall find out very easily if a same way, if a student has the same intelligence, or if a school will produce the same way, then in a same organization everyone will go. But it never happens, because intelligence varies from student to student. This is the belief, this is the concept and origin. Now I am going to tell you in a common word, what do you understand by the intelligence? What is it? So what is the simple meaning of intelligence? Here the simple meaning is intelligence is ability to solve problem, ability to understand something, ability to read, understand and apply in life, ability to working capacity, adaptation towards environment. So there are many things about intelligence. And if someone has the ability to adapt, why I am saying like that? I am saying like that if the person who belongs to Bihar wants to go in south and he is getting a government job over there, then he would have to survive, he would have to adapt the habit and culture according to the place. The place will not change its habit. That's why we have to adjust ourselves. And the people of India are lucky in this regard. Because you will see the people of India are not working in a particular country, but they are serving different countries and they are successful. And not only successful, they are worldwide famous. From this we can understand that Indian has this ability and capability to make and mark not only the nation, but also they can fly tricolors in foreign countries in their specific areas or fields. So today's topic, I am going to start with a simple quote given by Swami Vivekananda. He said, education is the manifestation
of the perfection already present in man. It means that he wants to say we do not educate someone. We have not the capacity to educate someone. What does from this quote Vivekananda wants to say? He wants to say that so education is something which is there within us. Education is something which is there within us. It is just how much we strive for it. It is just how much we strive for it and how much we desire to learn something new, because learning is something which is not bound by time, place and age. This is the definition given by Swami Vivekananda, and from his quote I am going to start today's session. But before starting today's session, I would like to tell you a few names, and you have to realize and understand yourself what sort of multiple intelligence this special person has. Like I am going to tell you about the actor who belongs to Patna, Bihar. Though he is no more, but in his short span of life in the film industry, he laid a fantastic role. Unfortunately, he is no more. We are very unhappy. We are missing him, and we shall also remember him forever. Now, do you know about whom I am talking about? I am talking about, yes, please tell. Yes, Sushant Singh Rajput. Think about the person who belongs to Patna and from a rural area, from somewhere else, and he was succeeding very soon. He played a leading role in the film industry, but unfortunately, he is not more there. It means that a student who is only intelligent at study is not called intelligent. A person who is good in different field, he is also regarded as intelligent one. Another example I am going to give you, that is also from Bihar. You have seen there was a student, Rituraj Chaudhary. He is an engineer and he is a student from Begusara, and he has found a bug in the search engine. He has found fault in the error in the search engine and notified to Google. Now his name is enlisted in Google as a guide or assistance. So you can imagine and feel proud yourself that Rituraj Chaudhary is one such student who belongs to Begusarai in a remote area or rural district, and he got success. Third, I am going to talk about, now think what sort of intelligence this student has. Because these very things I am going to talk to you in this throughout this session. Third, I am talking about the sports person, Ishan Pranab Kumar Pandey. That he is also known as Ishan Kishan, and he is an Indian international cricketer. He is so famous. You have seen and you are already aware about the Rajnath Singh. Now he is very famous. He was also once upon a time he was also a teacher. Now he is working or serving as a defense minister. Next I am talking about the Atal Bihari Vajpayee, Sarvapalli Radhakrishnan, Dr. Rajendra Prasad. These are all scholars and great personalities were once upon a time. They were teachers, they served the nation. I am talking about the youngest IS officer, Subham Kumar. He belongs to Katihar. He is a resident of Bihar, Katihar district. And you know, they secured the All India rank in IAS, and he is not only famous in India but in abroad. Next, I am going to tell you something about our own district, that is Banka district. So you have heard probably the name Jaya Snake from Banka.
and has got 526 7 rank in 6th BPSC, Bihar Public Service Commission exam. So these were the few examples I have given from the different fields: sports, actor, Google, politician, highly first class officers of our country. Why? To understand you, to realize yourself that a student who is good at study is not only called intelligent student. One who is good in music is called a good student. A student who is good in logic, like mathematics, he is called a good student. A student who has a good body movement is also regarded as a good student. A student who is not very poor at study, but who is, it might happen that, who is very good in scouts and guides, and he performs the excellent, so he is also regarded as one of the intelligent student. So who has given the concept that intelligence differ from, vary from student to student, person to person, and how many types of intelligence are there, that we shall discuss about here. But before that, what I feel, what sort of question generally we face while teaching and imparting system, while in our day-to-day life, when we have to attend 6 or 7 periods every day in different classes. So have you ever imagined, a few days ago I have seen that one teacher was, while entering the class, and the students were greeting him, good morning sir, and they were very happy to meet with him in the class. What is this? Simply we can say, good morning sir, how are you? But instead of saying, they were exaggerating. They were performing the word. They were greeting the word with some extra ones. What is extra ones? That extra ones is a multiple intelligence, and you have to find out what sort of intelligence he or she has. Sometimes you have seen, you are working tremendously on a particular student in a class, or he or she is not improving at all. It means the method which you are applying on a particular student is not sufficient for that. She is not understanding the way you are delivering the technique, delivering your subject matter. You have to change it and follow a different or variety pedagogy and methodology to teach him or her. Then you will understand something. Now, once I had visited, last week, I was not feeling well. I had found out that our student was, the class was vacant, no one was over there, the specific teacher was not present in the class. I had found out that one student was singing. Because the class was vacant, it is the sole responsibility of the principal. If the class teacher is not presenting in the class within 3 to 5 years, he or she must have to enter the class and attend himself or herself, if he or she is not busy. This is his primary work. So what I had found, a student was singing so sweetly, though it was against the background. I didn't utter a single word. I told him that your song was very sweet, but it is against the background of the school. But he apologized for it and told me, sorry sir. But I told him, thank you very much. You sing so sweetly, and one punishment I am going to give you, you have to sing a song. That very song which you were singing in the class. And he had said, I heard the song and it was so melodious. And I have shared the song with one of our biology teacher, Sri Thakurji, and I will request him to please sing this song in front of your colleagues so that they will feel happy and they will energize it. Please, sir. So please just listen what was the name of the song
and you will understand everything. And not only the song, how melodious he was singing. That's the different thing sir is going to do himself. And there is a good message is over here. And from this song you will understand if a person is good at singing, if a person is a good at singing, he what his career is. If a person who plays well different musical things, then what sort of a person he is, that you will come to understand in your class. So I will request our respected Thakur sir, Vimal Thakur sir, please there is no need to say the name of the student. You just sing that very song which I have shared with you day before yesterday. From here, sir, Yes. in sitting on. It's better if you will stand so that everyone will be. And then one our respected teacher is also sleeping at the end of the day. Mr. Mithun sir, please listen to the song. It will refresh you. You will feel happy. It will soothe your mind, refresh you, and analyze your mind. No, thank you, sir. Please carry on, sir. I am eagerly waiting for your song. एक गाना है जो कि नाम फिल्म का है। जब बच्चे विदेश में होते हैं तो उनके घर की क्या दुर्दशा होती है, क्या हालत होती है और किन परिस्थितियों से उनके परिवार को गुजरना पड़ता है, क्या क्या कष्ट झेलते हैं वो। तो इसी पर एक सॉन्ग है जिसको पंकज दास ने गाया है और गीत के बोल है चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है, 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 वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस के जाने वालों, लौट के फिर न आने वालों। सात समुंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां,
कांटे बन गए बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली, तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटे गोली, पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना, फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीबी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा, तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। It was really one of the wonderful song. It has a very massive and grand message to
the mankind, I would also like to tell that a student, a person who has different IQ, especially one who is also very good at a particular field. I would like to tell you or give you an example of our respected Thakur sir, that who belongs to a science background. He used to teach science subject, and why now the thing is that why does he teach science not in Hindi and English? The reason is that he has much more intelligence, multiple intelligence, much more interest in a particular field, and that field is science. In spite of it, he also sings very well because he has a linguistic multiple knowledge, multiple intelligence which is possessed, that he has shown. It means that a student who is good at singing is also regarded as intelligent one. Not only this, one more thing I would like to teach you from this very song. He has talked about the ladder. Nowadays you can understand that in every school or colleges the student just used to note down writing from ladder either in Hindi, English, Sanskrit just to get marks, but they try to create such an atmosphere that they love to write. They express their thoughts in the form of writing, either in Hindi, Urdu, English, Sanskrit, it doesn't matter. Once they will write something in Hindi in a form of a letter, think about 30 years ago, 15 years ago, where your parents or grandparents used to live in abroad or outside, and they used to send letter to you, how happy you were feeling. Presently also, whose relatives are living, residing outside, if he used to send letter in a form of a writing, then how happy we used to read it. And that very thing has taken away by media and technology. Okay, now I am going to tell you, and coming to the topic, multiple intelligence. I have given a number of examples about the multiple intelligence till now, but what is multiple intelligence? So it is a very easy thing. What is a theory, a technique, a way which describes the different way through which students learn and acquire information. It is such a theory which describes different way through which students learn and acquire information. तो मल्टीपल इंटेलिजेंस वह तरीका है, वह विभिन्न विधियों के द्वारा, विभिन्न मेथोडोलॉजी के द्वारा, पेडागोजी को फॉलो करते हुए आप छात्रों को इंफॉर्मेशन दें और छात्र उसे समझे। आपने इसके पहले और एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो मेरे अनुभव बताते हैं और लगातार सभी शिक्षकों के साथ वह समस्या आती है। तो मैंने सबसे पहला एक बात कहा था कि आप स्कूल में अनुपस्थित है, क्लास में लेट से जा रहे हैं, से बच्चे जो है क्या है आपको ग्रीट कर रहे हैं, और वो भी ग्रीट कर रहे हैं एक गुड मॉर्निंग वर्ड से, गुड आफ्टरनून से, सिंपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ना बोल के एक उसमें एक्सैजरेशन है, और उस टीचर का काम है उस एक्सैजरेशन को पहचानना, उसके मल्टीपल इंटेलिजेंस को पहचानना, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि वह किस तरह का छात्र है और वह क्या बनना चाहता है। यानी आप सिर्फ उसको अच्छा पढ़ाई ही नहीं दे रहे हैं, नॉलेज भी नहीं दे रहे हैं, और करियर ओरिएंटेशन भी करा रहे हैं कि वह आने वाले समय में कैसा बनेगा। यही मल्टीपल इंटेलिजेंस है, वह विधि जिस विधि के माध्यम से विभिन्न तकनीकों और पेडागोजी और मेथड को लेकर हम अपने नॉलेज को स्टूडेंट्स में ट्रांसफर करते हैं, उसे मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। पहले यह सोचती कि सभी की इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है एक समान होती है और किसी में अलग नहीं होती है, इसके फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। यह बहुत सारे स्कॉलर ने प्रूव किया, साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया, लेकिन हम जब आएंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस किसको प्रूव किया, और मल्टीपल इंटेलिजेंस कितने टाइप के होते हैं, और एक मल्टीपल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम देखेंगे कि अगर डिफरेंट टाइप के होते हैं वो क्या क्या है, कैसे पढ़ाना चाहिए। अगर देखता हूं मैं ऐसे एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि अगर एक ही तरीका हम अपनाते हैं और बच्चे अभ्यस्त हो जाते हैं, उससे बोरिंग फील करते हैं।
उसमें हम क्रिएटिविटी नहीं ला पाते हैं, तब वो डल या निराश हो जाते हैं और उनमें उस तरह की कंसंट्रेशन नहीं आती है। लेकिन उसके पहले सुने आप, मेरे कुछ प्रश्न हैं जो हालांकि आप लोगों को मुझसे करना चाहिए। हाउ डू यू फील व्हेन स्टूडेंट यूज्ड टू से not simply good morning, instead of they are saying good morning sir, how are you sir? If they are saying, how do you feel? Do you feel awkward, or do you feel that they are insulting you, or do you feel yourself that the student has multiple intelligence? Have you seen some students in your class, suppose class is going on and in other cases they want to go outside from the class. Meanwhile in the session, some students stand up in a proper posture and they used to say, sir, may I go outside? And some students is showing gesture like this, okay, or like pointing out one finger and telling, sir, may I go out? Or he is saying like that, sir, may I go out? So from this gesture you can understand that the student is thirsty. He wants to quench out his thirst. That is why he wants to go out in the class. Meanwhile in the class. So think about this. Some student used to say simply. Some student used to say with the gesture. Have you found out? I think suppose you are attending a class which is consisted of 35 or 40 students. Out of 40 there is such one student who is good at study, but he never sits quiet. Sometimes he moves his hand, sometimes he moves his head, sometimes he moves here and there. Sometimes he looks after others' activities. This sort of thing happens generally. How will you know this thing? If you have a good management, class management, if your subject is in your mind, if you are not focusing only the subject, apart from its subject, if you have a good senses to understand the student, then only you shall be able to do it. So understand who is an intelligent student. So a student is not only good at study, is called an intelligent. A student may be good in different areas, and he or she is also called an intelligent student. Now, how to assess multiple intelligence based activity in the classroom? How will you assess a student has a multiple intelligence? You have only 35 minutes to 40 minutes in class. Suppose one English language teacher, one English literature teacher is teaching in the class, and he is instructed the student to perform the drama. So here, what are the intelligence you can use? You can use logical, linguistic. You have to see some parameters on the student, how to assess it according to the new NEP 2020. So presentation you have to see, body language you have to see the flow, you have to see the presentation, thought, parameters like you have to follow the rubrics, and you have to use logical learners. Analysis you have to use, you have to analyze. Apart from it, you have to focus on the critical thinking. Then you will come to know how to assess the student. Now, another question comes to your mind, sir, how I apply multiple intelligence in a diverse class? As you told me that intelligence varies from student to student. First, understand what I want to say. मैंने कहा कि एक छात्र क्लास में 40 छात्र छात्राएं हैं, तो सबकी बुद्धि जो है कुशाग्र नहीं है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, तो आप कैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए? तो दो और एक टाइम पीरियड में आपको करना है डाइवर्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके क्लास सेम है, उनके एज भी हो सकता है कि सेम हो, लेकिन उनकी समझने की क्षमता जो है अलग अलग है, आईक्यू जो है अलग अलग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग है. तो स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग यू विल फेस अ प्रॉब्लम, बट आफ्टर अ क्लोज ऑब्जर्वेशन, after a month's observation,
you will come to know what sort of a student are there in your class. Someone you will find that someone is very good in different subjects, someone is good in sport, someone is good in music, because music is very necessary according to the new NEP. Music is compulsory in all CBSE schools, sports is compulsory in all CBSE schools. So you have to understand this thing. So what are the scope of 21st century? I am talking about NEP, new education policy. What are the scope? So it has different scope. What are the multiple intelligence? You have to be understand the pedagogy. Skilled is very necessary. If without any skill, if we think that we shall crack something in the old traditional way with the help of lecture and chalk, so that is no more. That is a rote learning. We have to emphasis on skill learning, and that skill learning is only known as multiple intelligence. Apart from it, another question is coming to my mind. Integration of multiple intelligence in 21st. Check what sort of a student you have in your class. What sort of, following the multiple intelligence, how will you find out what sort of students are there? So for this, you have to work on pedagogy. You have to follow not only a single method. Instead of it, you have to follow multiple methods. Multiple method. What is your goal? So you have to understand what is your goal in the classroom. Whether you are going to attend the class and after 35 minutes your period will be over, that is your goal. Or it is your goal to complete the syllabus. It is your goal to give question answer, exercise question answer. No, not at all. It is your goal must be to know the creativity, to know the different activities which is hidden in the student. You have to work on it. You have to encourage the student so that they can understand you and they will understand, and you will understand each and every one. How can we manage MI for in class? That is another question. How we can manage it or follow it multiple intelligence for in the class. For this, as I told you previously, you have to be active, you have to be visual, critical, and topic must need left before planning the topic. Suppose the topic which you are going to deliver in the class, you have to plan ahead. While preparing the lesson plan, you have to check that much more activity will be there. That activity based teaching must be there in your lesson plan, because whenever you follow this procedure, the student will be happy. And in spite of the diverse intelligence, the student will learn and understand the concept easily. Now I request one of our youngest teacher to show a video related to multiple intelligence. Then I will proceed what is multiple intelligence. Though I have told, then I will start types of multiple intelligence. Sir, please show it to our respected honorable mentors. Thank you so much for taking time out of your day. Stand this side and all of them. Hi, Alicia Marks with the lady. Thank you so much for taking time out of your day to watch this presentation. I'm going to share a tip or two with you to help make your day a little bit easier in the classroom. I hope you enjoy. Everybody has a unique learning style. They have a unique way of learning. We refer to that as a learning style or a learning intelligence. That is defined as a means an individual favors or their preferred method of thinking, understanding, and processing information. For example, if you're teaching bacterial
technology, infection control. Some students would prefer to listen to you, listen to a lecture, while others would prefer to research and study the information on their own. Other students might prefer to watch a video, while others would prefer to actually get up, laboratory setting, and discover for themselves what it all means. When our students have difficulties learning what we are teaching, it is most likely because they are processing the information outside of their natural learning style. It is believed that 75% of teachers today present material in a sequential, analytical manner, while as little as 10% of our students actually learn most effectively that way. Research tells us that we must integrate teaching strategies that meet the needs of a more multicultural student body with a variety of learning styles. Today's classrooms are filled with students who possess a variety of learning styles. No two learners are alike. They are all different. Each one is going to learn differently at a different pace. Some will get it quick, some won't. Some will grasp one thing, others will be challenged. Some will like one activity, others will like something else. We must respect the differences in our students. Thank you. Thank you very much. I hope you enjoyed this video, and from this video you come to know about multiple intelligence and how it is used in our day-to-day activities in the class. Now I am going to tell you about the multiple intelligences. So before proceeding to the multiple intelligences, I would like to tell you about the mechanism of brain. You know, you will be surprised to know, out of 100%, we use 0.5% of our intelligence. We work as a 0.5%. Means, as according to the mechanism of our brain, only we use 0.5%. In average. And so what about more than 95% we do not use it? You have heard about what is great scientist Einstein. You know, he had used only 4% of his brain. Only 4%. Think about this. And he became worldwide famous. After a lot of work, he has given the formula of the relativity. Am I right? He has given relativity and others also. So he had used 4%. I would like to tell you about the Karl Marx also, who had worked more than 20 to 40 years and has given a book, that is Das Kapital. And you will be surprised to know more than 25 countries have accepted it in worldwide. You know the word Das, D-A-S, Das, and capital. What sort of a rule was in the foreign country? And once it was published in a form of a book, not only a single country but more than 25 countries accepted that book. And they learned from it what they were practicing about it. So that's why we are using intelligence. I would also like to tell you one important thing. Sometimes it happens that there is a student in a class, your class or any class, he never listen to anyone. One thing, he is never afraid of anyone. Whatever the punishment you will give, he is ready to accept it. But he will not listen. He is neither good at studying nor at others. But at the certain period it happens. So you have to identify what sort of a student he is. He is also using multiple intelligence. I would like to give you another example about Osama bin Laden. He belonged to a very rich family, not a poor family. He was very good at his study. And what he had used his multiple intelligence in devastating way, not in a good way. So everyone has a multiple intelligence. Now, in what area you are using that intelligence, it depends. If someone is using in a good way, it has a good result. If someone is using in a bad way, in an antisocial way, it has
also result. That is the negative ones you can understand. Before it, I would also like to tell you, in the year 2004, when tsunami occurred, so what happened in Andaman and Nicobar Island? There were more than 300 naval army or naval were over there. More than 300. They were well equipped with their means, their new technology. And what happened, you know? Due to wrong forecasting, 300 navals submerged in tsunami. Why? They were forecasting about the technology. In other side, you will be surprised to know the tribal of the Andaman and Nicobar Island, there was a single one reported to die. They were safe. You know why? Because they were close to nature. They were well acquainted about the nature, and they had observed that last 4 days continuously there was no high tide, only low tide was over there. That's why they were alerted. They were moved from that submerged area back of the place, and they had migrated somewhere else for a couple of days. That's why the tribals were safe. So think about this. The tribal people is one side, and here the naval is another side. Those who had used all the technique and all the measures they had, in spite of it, they were not safe. So that is it is also part of the multiple intelligence. And what sort of a multiple intelligence? That I will also tell you. One who is very close to nature belongs to this category. Now, as I told you about the multiple intelligence, so it is clear to you. Now I would like to tell you what is the theory. Who has given this theory of multiple intelligence? And who was he? So, Howard Gardner. What was the name of the person? Howard Gardner. H-O-W-A-R-D. Gardner. Howard Gardner was such a person who has given this theory of multiple intelligence, proposes that people are not born with all of the intelligence they will ever have. Suppose a person have a different multiple intelligence, but one talent he has already possessed, that is God gifted. Every person has one sort of a talent that differs you from others. If it is good talent, then you have to accept it, learn it from him or her. Because a single person hasn't possessed all the good quality, but all individual person has a unique quality, and that quality is intelligence. Memory is not an intelligence. It is said that he has a good memory. You can say he has a good memory. He learned everything. Because if student, when we were a student, think about what the poem or the rhymes we used to know in our nursery classes, that still now in our mind. So you can say we have a good memory. Because everything happen our day-to-day life, and very few of them have a deep impression in our mind. The things which have a deep impression in our mind, we used to remember it. So I was talking about Howard Gardner's theory of multiple intelligence. So this theory challenged the traditional notion that there is one single type of intelligence. Previously, what was the concept? Everyone has a single type of intelligence, but they have a different factor. But this was proved wrong, and sometimes known as for general intelligence, that only focuses on cognitive ability. But to broaden this notion of intelligence, Gardner introduced 8 different types. Actually, firstly he had introduced 7 types of intelligence, and later 8, then one more is added. So first 7, then 8, then 9. So to broaden this notion of intelligence, I would like to tell you, Gardner introduced 8 different types, total 9 types of intelligence, consisting of linguistic, logical, mathematical, spatial, bodily, kinesthetic or kinesthetic, and musical, then interpersonal,
and one another intrapersonal and the naturalist. That we shall cover one by one. Gardner notes that linguistic and logical mathematical modalities are most tight valued in school and society. We are logical whenever I am talking about, I am giving one simple example. Logical means one who is very good in calculation. Math, one who used to like to do calculation. It is not only like, but it is his inner interest. He has some extra qualities of a math. That is why someone has become a teacher as a math teacher. It might happen that a math teacher who is very good in math, it also happens that he is not so good in English in comparison of his specific subject, because he has a keen interest in mathematics. Now I am going to give you one logical example. Please listen it and understand it. There was an old woman in Minnesota, and she became very old. And it was the time it was the potato season. What season was it? It was potato season. But as she was too old to work in her field, and unfortunately her husband was also not there. She was alone. She had only one son, and that son was also in prison. So at this juncture, when she was unable to work herself in the field, neither she had money to hire the laborer, that she decided to write a letter to her son. Then when she had written a letter, she had mentioned that, really, I am very sorry, my son, I became too old to work in our field, and at this juncture, it is a crop season, and I am unable to sow potatoes in our field. So what will happen to the next? I couldn't understand. That's why she was very sad, unhappy, because she had neither money nor she was able to do the manual work herself. Apart from it, she had no money to hire someone. Maybe the latter was raised by her son. Though he was in prison, what he has done? He has used his brain logically. He has written a letter to the police station and said that all the jewels and money was buried in my field. So when no sooner they got the news, they had seen, they had looked after all the plot of land, spaded the land completely, but they didn't get the jewels and other valuable things. And in this way, the work was done. And after a few days, the son had told her mother in a form of a writing that, "Ma, now you sow the potatoes." So here I want to show you wherever a person is, he or she, whatever he is or she is doing, if he has a logical thinking, the work can be done easily. The problem will be resolved, because it is the nature that if there is a problem, God also give you. He has already given how you have to solve the problem. But if you do not use your brain according to the senses, then you will not get successful. Understand? I hope you all understand about the logical thinking. In logical thinking, class 1 and 2, you can, nursery classes, you can also follow. Suppose you have given 2 marbles, you have bring it some other thing which is made of clay or marbles, and give 2 marbles, give another 2, and once again give to the same boy and ask him how many marbles it will. For nursery, for LKG, then what will happen? They will learn the counting, visualize the thing. Once they will visualize, they will understand, comprehend the thing. So that is very necessary. Now Gardner has written, here I told you Howard Gardner, he has written a book.
in 1983, and the name of the book was Frames of Mind. Means what was the structure of our mind? The thing which we had perceived, or the knowledge or idea which we have got about the single intelligence, that is no more. So he has Gardner developed a series of 8 inclusion criteria by evaluating each candidate. How will you evaluate someone? Intelligence that was based on a variety of scientific disciplines. He writes that we may all have these intelligences, but our profile of this intelligence may differ. That's why here all the teachers of different classes used to teach different subjects. Someone used to teach English language, someone used to teach Hindi, someone used to teach physics, someone is chemistry, someone is biology, someone belongs to SST background, used to teach SST, someone is good at sports, he is a physical education teacher, someone is good at counseling, he or she is a counselor, someone is good at library, he or she is librarian. So you can understand, someone is good at drawing, he is taking drawing classes, art classes, someone is good at computer, so he is taking or having computer classes. So you can understand over here that each and every teacher has a different sort of intelligence, and that is called a multiple intelligence. Now, what are the different intelligences we have? Before proceeding to the thing, I will ask a few questions to our respected mentors or teachers. First one is Mr. Sahai sir. I would like to know from you something, that how do you teach? What are your ideas about the multiple intelligences? Being an English teacher, how do you use multiple intelligence in your classroom? Please say something. Thank you, sir. As sir already told very nicely about multiple intelligences, right? And he already explained you what is intelligence. One thing only I would like to add first, that intelligence is nothing but you can take it broadly as IQ. IQ that has being with one, either by their born or they can learn. Two things is here. But on first one, I will strongly support this, that no, IQ is something that comes by birth, and we need to cultivate it only. Whatever we do in the rest of life, we are cultivating those IQ. So it can be measurable. We can measure it right individually, and accordingly we treat our student also. As we are well educated over here, and if I'll say about myself, when first I interacted with my student in this school, my purpose was only, and still I am following it, whenever I go to the class, first I try to understand. As I'm giving you an example of my very first day, this is school, when I interacted. So my purpose was to first know the IQ of student in that particular class. And I remember, I entered in class 9 on the very first day. As they were in class 9, definitely educators' choice or expectations were differently, and definitely it is on very high level, right? Where our thought, we think over there that they have multiple ideas, since they belong to English medium school, right? And CBSE definitely following various activities in terms of developing or adding different feather to their knowledge, right, into their hat. So with that thought process, I entered the class very first day. But instead of I believe on this method, I started to analyze first by giving very small questions, right, that belongs to not only from 9th class, but definitely somewhere it belongs to 2, 3 class and 4 class only. I took them at that level, right, to understand their IQs, how quick they are, right, so that I could decide my level from where I could take them.
As one sir said very well, that every student's IQs are different, right? You can't measure everyone's IQs on same, different. We can't do that. So we have to realize everyone's comprehensive part, how they take, and since we are talking on different languages, this is another language which definitely they don't have at everywhere, especially at their house. So they are only here for 3-4 hours, and there we are giving different environments. So definitely environment does matter to create your IQs. As we talk about different IQs over here, one of mentioned over here, bodily kinesthetic, which really is very important over here, that helps you to understand, or you can read your children, right, looking at their body movement, how they move while they speak, whether their hands and eyes are very much related, or face expressions are supporting their words or not. Looking at that, we can understand, right? There's also a part of our intelligence, how we decide being a teacher. Being a teacher, how we decide, right? Whether students among 30, 40, and 60, because I'm the person who stands before 62 students. And among 60 students, we have to realize that everybody is getting your point. So how we will do that? It is again part of our intelligence. So that comes as multiple intelligence. It is one of the type of it. And being a teacher, we have to be textured on many, not only on single. Right? So here I personally give some little small activities, and giving some sort of very easy questions, sometimes make them comfortable to interact with the teacher. It's very important. And might be they are all many of them who has much hesitation to stand even before you, whether they have answer, they have really answer, but they have very great hesitation. I'm using the word very great hesitation to speak up on that. So it is again our intelligence, how we throw the words on them to make them easy to the class. Right? It is very important. Instead of sometimes teachers start to shout on them, because teachers' expectations are definitely different when we are going in higher class. But when we are in lower class, if this combination is wrong, right, then definitely teacher will also feel difficult to cope up with those. Right. So our expectations being into senior classes or junior classes get different. So in senior classes, how to treat those and how to identify these IQ systems. We have to follow such methods, as our methods talk about visual or spatial. That it is the ability how we perceive those. Right. And accordingly we decide. Accordingly we decide how to start this. What level we have to maintain. Somewhere we need to find a very common start in that particular class, so that everybody will get concentrated on that. And our purpose must be get complete. This our purpose in the class to take every students on a common platform. So how to take those? Because they all are from different backgrounds, right? IQs are different. So when I get inside the class, my purpose was to identify the students who are better on which. If somebody is good on presentation, right? Sometimes we do this activity as we have play, right? In class 10 there is the proposal, a play is there. So how to talk? Our duty is to put them in that character. Unless they will feel themselves in that character, that expressions with this intellectual skill, that's called sometimes we have the intellectual skills also, and infra skill. That's what I talk about, right? So we have to understand over here which character we are into and how to speak about that. Unless we feel every expression the author has written with the purpose, right? We can't put ourselves into that, definitely will not understand. Another method always I used to talk, like the major problem they have vocabularies.
and it is not easy as we thought. And without vocabularies, this language will not be yours. To adapt this language, your vocabularies must be, higher. Like in Hindi, when you say, right, "Pani peene ke liye chahiye," you have this word "pani" and you know that liquid is called "pani" because somebody has taught you since your childhood. So your IQ has developed. That IQ was there, but as I said, very beginning, that it needs cultivation. That we have to cultivate it. We have to nourish it. Unless you have that IQ, but that will have no use. So convert it into utilizations. We have definitely, this is my very strong belief that I have to nourish it. I have to nourish it. And that comes in you by consistency there or continuously hitting that point. Since childhood, definitely, whenever we used to give water, I say, "Beta pani piyo." And pani, he just look at that. Right, that is the glass. That is the glass, and what liquid is there, that is pani, or something when we produce milk, we say "doodh." So they recognize that by visualizing. Visualization is very important in this method again, right? You have to visualize what you talk to understand a language. When I talk about English language over here, so definitely we have to visualize again in English, right? As in Hindi we visualize "pani piyo," "pani samajh gaya." But when I say the same child at his age of 14 to 15 years, bring glass of water. Now what is water? First time he heard, because this vocabulary was not in his dictionary. Right? How could he understand what I demanded for? Why? Again, if you say it is pani, oh pani. I am giving an example of my child, right? Story of yesterday. Yesterday he was with his grandpa. I was also there, and the shopkeeper, right? He asked something, and he said, "Give me 35 rupees." 35 rupees, he has no idea about 35 rupees because he never used to go in that Hindi world. It was my fault, right, that I didn't give him 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, right. While my father always used to say, "You should give that also." But I'm not into that. So he now used to teach him that Hindi. So today morning he was just practicing it. It's a very good habit in him. If you give something, he used to practice all the time. And today he was counting, right, 31, 32, 33, 34, 49. So 49, he is having no idea, but he remembered the word 49, something is there. So IQ is there, but we have to nourish it very properly. So you have to correct all the time, you have to consistently hitting that point all the time to cultivate that IQ in the right place. Else, having these all types of IQ, I'm not saying all types of IQs with everyone. If that is, then they will be tested in every field. Because the person who are very good in interpersonal, if the students are there in my class, right, they are very good in interpersonal, right, they are very good idea of talking, interacting. Then I always promote that children, trying to give some activities where he or she will get an idea to interact and ask questions, give answers. More or less, I help them to understand, learn, instead of coming with complaint and question all the time. I'd like to know very much, sir, I have given you over here, right, that before problem arises, our nature, right, already builds over here solutions of that. Right. If that is not there, then definitely problem will not come there. I strongly believe on it. Now we had and we come across through pandemic, right, Corona. Now see, Corona, just create many problems in our life for last 2 years, right? But do you think that we don't have solutions of that? Now we have solution, and do you think that we have created it? Are we creator of those content that we had added in that injection? Definitely not. It was existed in our nature. So nature has everything existed. That solutions is there. Only we need to identify the problem and nature of that problem and how do we get it solved with the existing one. And we are using that nature to solve our problems.
This is what I strongly believe. So I was talking about in my class, when the students are having very good interpersonal skills, I used to give them that opportunity to speak, better to come in front and then speak. So looking at that, and if you make ease to the class, make them comfortable, on start to give those things only that they can be able to speak on, if they are weak. Right? Make them comfortable. First, let him or her start to speak. Anything. Right? Just give them puzzle also sometimes. Sometimes you just make them stand up and in that environment that they thought, yes, there is something to speak up, how to speak, because they were never into that. Right? So you have to give them very easy question that they have answered. They will feel very happy that yes, they spoke in front of many. Now confidence will be built. Right? By giving this, you can get your purpose fulfilled with this. So this was our purpose. And there are some methods, what I said, visualizations, right? Visual method is there, and the body calisthenic method we use over there, right? Sometimes I'm not mathematics teacher, but definitely certainly we use some logic that is related to mathematical. Somewhere we all are not teachers from math backgrounds, but we all live into that. We can't say that we cannot be in mathematics. Sir is here with his consent. I would like to say, alright, this is there, and we always live into that. I think I'm taking very much time because it's very interesting topics sir gave me, right? So I will not take his time and further time. This I try to conclude over here. But in nutshell, I would like to say that understand the strengths, intellectual skills, right, and their intelligence based on different, and try to put all them on common platform, right, so that they could be able to come up with our ideas and what is our purpose, what is the school's purpose, that will be fulfilled. Thank you. Thank you very much. You have explained it in an elaborate way. After covering one topic, I will give a break for 10 minutes to everyone to refresh yourself. So, as I talked about the topic multiple intelligence, I hope you understood the concept of multiple intelligence. Now, I would like to tell you what is the idea behind this theory. What is the idea? Why we are using multiple intelligence? So, as there are two pillars in any school. One is a teacher, another is a student. There are two pillars. One teacher, another is students. Though the building is very splendid, in magnificent, it was built in, suppose a building is built in a magnificent way, but where there are no good teachers, the school will not run at all. If the school will not success or develop, the school used to success or get success and develop by the teachers only. So if the teachers are free, if the teachers are good, if the teachers are happy from inside, everything will be good. This is the conception. But my question was, what is the idea behind the theory? Because a person who is hungry, and I will tell him to go and fight in the war, so it is ridiculous. So what is the idea behind the theory? Means which theory? The multiple intelligence. The idea behind this theory is that the student learn through a variety of different ways. The idea is that the idea is hidden behind this theory is that students should learn through a variety of different ways. A different ways means different abilities. Means a teacher has to use multiple intelligences in his or her subject to deliver his subject matter, transfer his or her subject matter to the class. Now I would like to tell you how many types of intelligences are there. They are visual and spatial, which you have seen and came to know. You have seen verbal, linguistic. First one is a visual or spatial ability.
Second one, verbal linguistic abilities. Third one is a musical rhythmic abilities. Fourth one is a logical mathematical abilities. Fifth one is a interpersonal abilities. Sixth one is a intrapersonal abilities. Seventh one is a naturalistic ability, which I had given the example about the earthquake or tsunami which took place in the year 2004, and the eighth one is the bodily kinesthetic. So these are the activities. One more multiple intelligence is included that I will discuss, and you will be surprised to know this great personality is working still now. Think working on this intelligence. Whether is there any more intelligence hidden in this earth? So he is ready to include it over there. I would like to tell our youngest teacher to show a video to the teachers, and we are giving a break for 10 minutes from 2 o'clock to 2:10. 2 o'clock to 2:10. Once again I will resume the session, but I will before that I will request our youngest teacher to please show a video to our mentors. The theory of multiple intelligences was introduced by Howard Gardner, and he had been studying brain damage and neurological impairment in adults, and he was watching how brain injury affects what people are capable of doing. He identified 8 areas that seemed to be affected by brain injuries and multiple intelligences. Educators and professionals became interested in the theory because they wanted to see what would happen when children are educated in a way that addresses each of the 8 areas of the brain, and will it affect how they perform in the world and how they produce things and solve problems. I became interested in multiple intelligence theory when I was working with special ed kids. Howard Gardner's definition of intelligence is the ability to solve a problem or create a product that matters to society. I want children to be able to solve problems creatively, so that if they're given an open-ended problem, they can address it without fear. I first identify who the team leaders are going to be, and then I work the rest of the group based on what that team leader can handle socially. The groups would stay the same, and the leader would stay the same for the whole series of projects. And I think taking the leadership role is a really key thing for a lot of the kids, especially the kids who have special needs. It really changes how they're viewed by their peers when they're the leader and they're making decisions and they're guiding their peers through some activities. Even if it's just which activity they're going to next. Everybody gets to be a leader at some point. When you go to the language center, you're going to take a postcard, and you're going to try to use describing words so that your partner understands what you saw when you were looking at the postcard. So you're going to study the postcard. When you go to math, you're going to design, you're going to plan a building, and then you're going to color in 1-inch squares on the graph paper, and then you're going to build it after you plan it. So you're going to fill in all those spaces, and then you're going to build it with 1-inch squares and 1-inch tiles. Okay? When you go to art, you're going to practice making all different kinds of lines. You're going to make a heart, and then you're going to cut it into 4 pieces, and all those different lines that you can use. Can somebody name a different kind of line? Squiggly. Use a squiggly line. Connor? Zigzag. Zigzaggy line. Diego? Up-down lines. When you go to music, you're thinking about different sound words. So you're going to have words and sounds that go together. And when you go to movement, you're going to study these pictures, and you're going to get all different kinds of ideas about the sounds that you hear in the picture, things that might be happening in the picture. And if you were the director, Dylan, you could say, I hear crabs and lobsters, and everybody on your team would make that sound and make that motion. Okay, if you go to personal, you need to take the paper that says what you like, what you sort of like, and what you don't like very much in school. So you get to choose for yourself. You need to think about your own ideas. When you go to social, you're going to act like a scientist or an artist. And when you go to science, you're going to make your mobile. You're going to think about balance and how you can create space. You're going to look at the different things that you can put together to make a mobile. We'll have one set of projects that will last for 2 or 3 weeks while children work through all of the 8 intelligence areas. What we're doing is we're making an observation of what we see in the picture. Okay. There's a river. Good observation.
observation. I'm going to pass it to Antonia. What they're doing in this station is they are experimenting with line and design. So they've cut out a heart and they've cut it into four different pieces. And each part of the heart has different forms of line. So they're experimenting and exploring line and design. Tell us what kind of... Thank you. Now, I will request our one of senior science teacher, Mr. Madhukar sir, Mr. Madhukar Kumar Singh, please express your views, being a math teacher, science teacher, what sort of logical intelligence do you use to teach your student, and what are the activities you suggest them or you prepare yourself while preparing your own data ahead before delivering the class? Like lesson plan. Suppose you are preparing lesson plan, what are the activities? Or how do you teach, use logical intelligence in your class along with your students? Thank you, sir. Thank you very much. And good afternoon. Good afternoon, sir. Teachers and principal, sir. आज का विषय मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुआयामी प्रतिभा। सौभाग्यवश हम लोग सभी मनुष्य हैं और बहुत क्या कहा जाए फुर्सत से ईश्वर ने इस पृथ्वी को जन्म दिया पृथ्वी पर, जिसमें बहुत तरह की प्रतिभाएं पाई जाती हैं। मनुष्य कुछ भी कर सकता है, जिसका उदाहरण पुराने समय से लेकर के अब तक हम लोग बहुत चीजों को देख पाए हैं। और सौभाग्यशाली हम सभी हैं कि हम सभी शिक्षक हैं जो अपने समक्ष हर दिन नई नई प्रतिभाओं को देखने का मौका मिलता है, देखते हैं। शिक्षक के लिए मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि शिक्षक क्या है। कहा जाता है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ। यानी कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र नहीं बन सकता है, कोई भी वनस्पति ऐसा नहीं है जिससे कि औषधि नहीं बन सकती है, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। योजक महत्वपूर्ण है और हम सभी सौभाग्य से योजक हैं जो कि हर दिन नई नई प्रतिभाओं को परखते हैं, जांचते हैं और उन्हें अपने सामने में लाते हैं। तो आज का जो विषय है बहुआयामी प्रतिभा, और उन चीज़ों को हम लोग अपने स्टूडेंट्स में जो देखते हैं उनको परिलक्षित करते हैं, उसी के विषय पर मैं एक छोटा सा प्रसंग के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा। पुराने समय की बात है कि जैसे कि हम लोग जो अभी से थोड़ा सा 10-20 साल पहले के समय में चले जाएं, अक्सर जब लड़कियों की शादी हुआ करती थी तो दहेज तिलक देने के लिए या फिर व्यवस्था के लिए कुछ सामग्रियों को घर में जमा किया जाता था, और व्यवस्था के लिए मतलब पैसे, जेवरात, इन सब, और साथ ही साथ बगल में के कुछ उपद्रवी लोग जो भी चोर चक्के होते थे वो लग जाते थे कि उनके यहाँ जाकर के चोरी करना। एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए व्यवस्था कर रखी थी घर में, साधारण संसाधन जो भी है, पैसे, जवाहरात, चांदी ये सब। तो चोर आ गया, पता चल गया करके मान लीजिए चोर घूम रहा है, तो फिर उन्होंने एक सोचा कि कैसे इससे उबरा जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि रात में अपनी धर्मपत्नी को जोर जोर से चिल्ला के ऐसा करते हैं कि ये सारा सामान कल सुबह तड़के जो है कुआं में डाल देते हैं, वहाँ सबसे सुरक्षित जगह रहेगा, और आज भर जग करके हम लोग इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। चोर सुन करके बैठा था। उस दिन वो लोग लौट गया और दूसरे दिन उन्होंने जो है सो कुएं में उसकी जगह पर दूसरा ही चीज डाल दिया, और उसके बाद रात में उसमें खूब अच्छा सा जो मतलब पटाने का साधन होता है, डंडा को कहते हैं हम लोग गाँव घर में, तो डंडा को भी लगा दिया। बगल में उनका केला का बगान था,
रात भर चोरों में पूरा पटाया, पानी को अकेला वो पटा लिया अपना चोर परेशान हो गया। तो ये इंटेलिजेंस है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां हो उसमें कैसे हम अनुकूलन को ढूंढते हैं, वही हमारा इंटेलिजेंस कहलाता है। तो बच्चों में इस तरह की प्रतिभाएं बहुत हमें उन्हें देखने का जरूरत पड़ता है। देखते हैं तो समझते हैं। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो बहाने बनाते हैं होमवर्क को लेकर के, ये लेकर के, वो लेकर के, तो उसमें भी संभावनाएं हैं। उनकी प्रतिभाओं को हम ढूंढ सकते हैं कि उसमें किस तरह के विचार, वो बच्चे एक अच्छे नैरेटर बन सकते हैं, कहानियों को पढ़ना, कल्पनाओं के आधार पर कुछ सृजन करना, उस तरह की उसमें प्रतिभाएं पाई जाती हैं। कोई भी चीज़ दुर्गुण नहीं है, उसको हमको उसके गुण में कन्वर्ट करना। मैं गणित का शिक्षक, विज्ञान भी पढ़ाता हूँ विद्यालय में। तो बच्चों में इस प्रतिभाओं के खोजने के दरमियान एक बार मैंने बच्चों से कहा, और हम लोगों ने एक टीम बना करके कि मतलब मजाक मजाक में कहता है लोग कि आसमान में तारे को कौन गिन सकता है और सिर के बाल को कौन गिन सकता है, दोनों को उपमा में देता है लोग, जितने सिर में बाल आसमान में उतने तारे। तो बाल को कैसे गिनेंगे हम लोग, सिर के बाल को? तो उसके लिए फिर हम लोग वो ग्राफ पेपर पर पढ़ा रहे थे बच्चों को, एरिया के बारे में, प्रत्येक स्क्वायर में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो फिर एक्टिविटी के दरमियान में एक स्क्वायर पेपर लिया गया और एक बच्चे के माथे पर उसको डाला गया, तो टोटल एरिया इतना कवर किया और एक छोटा सा जगह पर बना करके उस जगह सारे केस को, बाल को गिन दिया गया और फिर उसके एरिया से उसको गुणा कर दिया गया। तो इस प्रकार से सिर के बाल को भी गिन सकते हैं। ये स्टूडेंट के अंतर्गत मल्टीपल इंटेलिजेंस है। गणित के अध्यापन के दरमियान में जब छोटे बच्चे बड़े होने लगते हैं और वह प्राय फार्मूला से जूझते हैं, फार्मूला याद करना है, फार्मूला याद करना है, तो साधारण सा फार्मूला रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, बच्चे किसी तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हें समझा दिया जाता है या फिर अच्छे तरीकों से समझाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो लंबाई गुना चौड़ाई से हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। अब वो जैसे ही आते हैं एक नए फिगर पर, सिलेंडर यानी कि क्या कहते हैं सर उसको, बेलन, उस पर आते हैं तो कैसे फॉर्मूला कि सर बेलन का 2πr/h क्या कैसे होता है, तो उसके सामने कुछ डिफरेंट चीज आ जाता है। तो हम उन्हें एक्टिविटी के द्वारा बता सकते हैं कि ये अभी रेक्टेंगल है, आयत के आकार में, और जब इसको हम मोड़ करके गोल कर देंगे तो ये फिर बन जाएगा बेलन। इस रेक्टेंगल का लंबाई इसमें कन्वर्ट हो गया सरकमफेरेंस में, लंबाई गुना चौड़ाई होता है एरिया, तो ये सरकमफेरेंस में कन्वर्ट हो गया, गोलाकार वाला भाग ये सरकमफेरेंस हो गया जो कि 2πr है। और इसी रेक्टेंगल का एक भाग है ब्रेथ जो कि हाइट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से फार्मूला का कन्वर्शन कर सकते हैं, बच्चों के दिमाग पर बहुत कम लोड पड़ेगा और उसमें क्यूरियोसिटी दे देगी। कुछ बच्चे इस सब चीज़ों में बहुत माहिर भी होते हैं और सहयोग भी करते हैं। तो हम सभी शिक्षक हैं, एक रिसर्चर्स, हमें बच्चों में उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को ढूंढना है और उनका एक समग्र सारांश बना करके उन्हें उनके भविष्य के लिए उनके अभिभावकों को सौंपना है। डॉक्टर जिस तरह से किसी बीमारी का इलाज करने के लिए रिसर्च करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उसी तरह से हम लोग स्टूडेंट्स को करते हैं। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है, बहुत कम समय देते हुए अब मैं समाप्त करना चाहूँगा। बहुत अच्छा उदाहरण है, एक फिल्म आई थी तारे जमीन पे, उसमें एक लड़का था जो एक बीमारी से ग्रसित था, डिसलेक्सिया, जिसमें कि उसको अक्षर जो है ओवरलैप कर जाता है। तो उसमें जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक की भूमिका पर अमित मान, उन्होंने उनकी उस कमी को उनकी प्रतिभा में डेवलपमेंट कर दिया। वो कलर को मिक्सिंग करके जो कुछ आर्ट का प्रतियोगिता की गई थी उसमें सर्वोत्तम स्थान उन्होंने लाया। तो हम सभी शिक्षक जब तक इस तरह से खोजी प्रवृत्ति के नहीं होंगे, स्टूडेंट्स के डिमेरिट्स को मेरिट्स में कन्वर्ट करने की योजना नहीं बनाएंगे, तब तक हम क्या कहते हैं, एक
अच्छे भविष्य को नहीं तैयार करता है। के साथ ही मैं प्रोग्राम लेता हूँ और सबसे आग्रह करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस में लॉजिकल इंटेलिजेंस एबिलिटी का जो बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सभी शिक्षक गणों के सामने एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किया, वह वास्तव में अतुलनीय है। और इसके साथ ही साथ एक अच्छे बच्चे को अच्छा बनाना आसान होता है, लेकिन आपने इसकी दूसरी पहलू पर बहुत ध्यान देते हुए कि कमजोर बच्चों को भी किस प्रकार नए पेडागोजी मेथोडोलॉजी के साथ, प्रेम और सद्भावना के साथ उसे बेहतर बनाया जा सके। और यही इस सेशन का उद्देश्य भी है कि बच्चों के जो बहुमुखी प्रतिभा है उसको पहचान कर उसके अनुसार कार्य करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारे अन्य सभी शिक्षकगण भी इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते होंगे और इन्हें अपने कार्यशैली में, विद्यालय के शिक्षण संस्थान में, अपने पठन पाठन में अवश्य इसका सदुपयोग करके बच्चों की ओवर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। अब मैं हमारे आदर्श विद्यालय की अनुभवी शिक्षिका और वाइस प्रिंसिपल मैडम को मैं निवेदन करूंगा, श्री बीना कुमारी जी को, कि आप हिंदी और संस्कृत की अच्छी शिक्षिका हैं, जानकार हैं। आप अपने कक्षा में बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास कैसे करते हैं? बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा विकास करने के लिए बच्चों में तरह तरह का क्रियाकलाप करवाते हैं। कभी बच्चे से अचानक कहते हैं तुम इस त्योहार में गाँव गया, घर गया, फिर वहाँ से मेला देखने गया, तो बताओ मेला में तुम क्या करते हैं? कैसे ढंग से बोलता है तो कुछ ऐसा बच्चा बोलता है कि हाँ इससे मैं हम वहाँ गए, इससे देखिए, इससे किए। कभी कुछ करते हैं अच्छा तुम घर से आते हो तो रास्ते में घर से विद्यालय आने में तुमने क्या क्या देखा, कहीं कोई प्रकार घटित बात अगर कुछ ऐसी हुई है तुम उसको कक्षा में उजागर करो ताकि बच्चे तुम्हारी बात को सुने। तो इससे लगता है कि नहीं वह इस ढंग से कुछ बच्चे बताते हैं, लगता है वह आगे चल करके पत्रकार बन सकता है। वह अपने कुछ आसपास देखते हैं तो कई कई बच्चे से कविता पाठ करवाते हैं, तो बच्चे का कविता पढ़ने का जो लय होता है उसका, उसमें कविता में जो भाव होता है, कहीं विदुष की कविता है तो उनके ढंग से बच्चा पढ़ता है। तो कविता पढ़ने के माध्यम से बच्चे में लगता है कि वह आगे चल करके एक अच्छा गायक बन सकता है। कभी कभी क्लास में होता है बच्चे खूब शोरगुल करते हैं, तो उस समय कुछ ऐसा करना पड़ता है ताकि बच्चे का ध्यान क्लास के अंदर आ जाए। तो कुछ कहानी के माध्यम से, कुछ प्रेरक प्रसंग के माध्यम से, एक प्रेरक प्रसंग है छोटा कि एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं घूमने जा रहे थे, नगर भ्रमण में निकले थे। तो एक नगर जब पहुंचे, गांव पहुंचे, तो वहाँ के व्यक्ति उतने अच्छे नहीं थे। वहाँ के लोग हमेशा आपस में झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, अपशब्द का व्यवहार करते थे। तो साधु ने सबको देखा तो कहा कि तुम बसे हो, उसका आशीर्वाद दिया और वहाँ से निकल गए। उनके साथ जो शिष्य थे उनको अच्छा मतलब दूसरे का आश्चर्य लगा कि ये महात्मा ने क्या बोल दिया। फिर दूसरे गाँव जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ के सभी लोग सभ्य हैं, उनका आदर सत्कार भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ। तो साधु ने उनके आदर सत्कार से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ। तब शिष्य को रहा नहीं गया, कहता है महात्मा हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ के लोग असभ्य थे वहाँ आपने उनको आशीर्वाद दिया कि बसे हो, और जो जहाँ व्यक्ति बहुत अच्छे थे, आप हम सबका स्वागत अच्छा से किया, तो आपने आशीर्वाद दे दिया कि उजड़ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? बोला कि देखिए जो गंदे हैं वे कहीं जाएंगे वे अपनी गंदगी को फैलाएंगे, इसीलिए उसका मैंने आशीर्वाद दिया कि तुम लोग बसे हो, जहाँ हो वहीं रहो, आगे बढ़ने का तुमको कोई जरूरत नहीं है। और जो सभ्य हैं
वो कहीं भी जाएंगे तो अपनी सभ्यता से, अपनी बुद्धि से सबको अच्छे ज्ञान देंगे, अच्छे उपदेश देंगे। इसलिए मैंने उसको उपदेश दिया कि तो बच्चों तुम लोग भी ऐसा करो कि अपनी प्रतिभा से दूसरे को विकसित करो, तुमको देख के कोई सीखे। तुम चले भी जाओगे तो तुम्हारा मन होगा कि नहीं वह ऐसा था, उसका अनुकरण करें हम भी। तो इसी सब के माध्यम से बच्चे को थोड़ा सा क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इस संदर्भ में मैं थोड़ा कुछ विषय को और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि एक्टिविटी बेस्ड जो है इसको बढ़ाने के लिए मल्टी इंटेलिजेंस के अंतर्गत NEP के अंतर्गत 2030 के अंतर्गत हमें देखना होगा, बच्चों की रुचि को समझना होगा। आप कक्षा में अवश्य आप ऑब्जर्व करती होंगी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी प्रश्न के उत्तर देने में अपने मन से उत्तर बनाते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ उनकी व्याकरण की शैली बहुत अच्छी होती है, उनका उच्चारण बहुत सही होता है और निर्भरता के साथ आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और हमेशा बेहतर से बेहतर करने का प्रदर्शन करते हैं। उनकी रीडिंग शैली जो होती है बेहतरीन होती है, उनकी राइटिंग शैली बहुत अच्छी होती है और कोई अच्छे वाचक हो सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप विभिन्न तरह के नाटक इत्यादि का प्रयोग करके, विभिन्न एक्टिविटीज का प्रयोग करके अपने क्लास को और बेहतर बना सकती हैं, अच्छा बना सकती हैं, ताकि भाषा के प्रति व्यक्तियों का रुझान बढ़े और भाषा में जो रस है वह उसको आनंदित करे और एक ऐसा समय आए कि वह भाषा के आधार पर अपने करियर ओरिएंटेशन की ओर जाएं। और बताइए आपको कि बच्चों को भाषा का ज्ञान होने से, लैंग्वेज का ज्ञान होने से, वह भाषा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कुछ भी क्यों ना हो, उसमें उनके क्या क्या फील्ड है, क्या क्या उन्हें फील्ड में जा सकते हैं, ये आप बेहतर समझ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब मैं विद्यालय के साइंस विभाग के विज्ञान शाखा के हमारे युवा शिक्षक मैं आदरणीय श्री खुर्शीद जी से अनुरोध करूंगा कि क्या बताइए कि एक व्यक्ति आर्किटेक्चर है, आप एक अच्छे बेहतरीन प्रदर्शक हैं वर्ग में, क्लास में, और आप कैसे पहचान पाएंगे कि एक व्यक्ति जो है आर्किटेक्चर के गुण उसमें है या आर्किटेक्चर की क्वालिटी है और उसको कैसे प्रोत्साहित करेंगे? थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आर्किटेक्चर सर, जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, आर्किटेक्चर का मतलब घर बनाने वाला होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, गॉड को हम लोग एक ग्रेट आर्किटेक्चर के रूप में देख सकते हैं कि जिन्होंने इस पूरी दुनिया को किस तरह से सजाया, किस तरह से बनाया कि हमारी हर जरूरत को फुलफिल कर रहा है। अगर एक आर्किटेक्चर कुछ घर बनाने के लिए कहीं जा रहा है तो सबसे पहले वहाँ मिट्टी को देखेगा कि वो मिट्टी कैसा है और उस मिट्टी पर कैसा हम स्टेबिलिटी के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद उस स्ट्रक्चर मजबूत हो, अच्छा दिखे, इसके लिए इमेजिनेशन का यूज करता है, वो कल्पना करता है। तो एक आर्किटेक्चर में कल्पना करने की ताकत होनी चाहिए कि वो इमेजिनेशन कर सके, उसके पास कुछ विजन हो सके जिससे कि आगे जाकर उसको ले चले। एक टीचर में भी आर्किटेक्चर की गुण होनी चाहिए। वो किसी स्टूडेंट को देखने के बाद, पढ़ने के बाद वो इसका इमेजिनेशन करे कि ये स्टूडेंट किस फील्ड में जा सकता है, किस लेवल तक जा सकता है और उसे ले जाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। एक स्टूडेंट जो है एक मचलता हुआ कह सकते हैं कि नदी की तरह होता है, वो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा। उसी जगह पर हम लोग टीचरों की इम्पोर्टेंस बन जाती है। उसी जगह पर हम टीचर उसे रास्ता देने की कोशिश करते हैं, उसके प्रश्नों को सुनकर और उसका सॉल्यूशन देकर उसको रास्ता प्रोवाइड करते हैं और उसे मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक आर्किटेक्चर के वर्क को बताया
प्रश्न इस प्रकार था, बहुत अच्छा बात है, आपने बहुत अच्छे अपने विचार प्रस्तुत किए कि हर व्यक्ति, ईश्वर जो है वह सबसे बेहतर आर्किटेक्चर है। आपको बच्चों में आर्किटेक्चर के गुण कैसे पता करने होंगे, तो उसके लिए कुछ खास तरह की एक्टिविटी जो बच्चे प्रदर्शित करते हैं आपके कक्षा में, जैसे आर्किटेक्चर बोले तो सिंपल सी बात है कि वह पोस्टर मेकिंग में क्या है, आर्ट में क्या है, इसी तरह की ग्राफिक वर्क कैसे करते हैं, वह मैथ्स का ही ग्राफ क्यों ना हो। जैसे कि हमारे अभी मैथ्स के टीचर ने बताया कि वह ग्राफ का प्रयोग करते हैं, तो जब भी हम विज्ञान की यूनिट चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस यूनिट चैप्टर में फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट की जहां हम बात करते हैं, उसी के बाद यूनिट की बात करते हैं। तो जब हम इस यूनिट के प्रसंग में जाते हैं तो मुझे पता चलता है या हम लोग जान सकते हैं, हालांकि एक प्रश्न जो है 11-12 का है, कैसे हम बालों की संख्या को गिन सकते हैं, तो किस प्रकार से कहना है जो, और एक्टिविटी के साथ हम किसे कैसे इसको प्रदर्शित करें वो बहुत आवश्यक है। और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं, जैसे मैंने म्यूजिक का उदाहरण दिया, आपको फुटबॉल प्लेयर का दिया, सिंगर का दिया, कोई मैथ्स में बहुत गुड है, रीजनिंग में बहुत गुड है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत कुछ बेहतर है, कोई न्यूमेरिकल आपके क्लास में बहुत अच्छा करता है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन के बाद 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद आपको अवश्य पता चल जाता है कि इस बच्चे की इंटरेस्ट किस विषय में है और किस एरिया और फील्ड में है, उसी एरिया और फील्ड में उसे बेहतर बनाया जाता है। बहुत अच्छा लगा आपके अपने विचार, इसमें थोड़ी और आपको सुधार करने की आवश्यकता है, थोड़ी इसमें रिसर्च करने की जरूरत है। जब भी आप लेसन प्लान के साथ विद्यालय में क्लास में जाएं अपने, खास करके किसी भी उच्चतर क्लास में 9 से 12 में, तो ऐसा प्रयोग करें कि इसमें एक्टिविटी बेस्ड बातें ज्यादा हो और आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, आपकी सोच भी बहुत अच्छा है, इसके लिए असंख्य धन्यवाद। अब मैं आता हूँ जो, जैसा कि एज आई टोल्ड यू कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, सो प्लीज लुक इट ओवर हियर। Here it is given verbal intelligence. Verbal intelligence is a type of intelligence that is related to language skills. Verbal intelligence एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो लैंग्वेज स्किल से डेवलप होती है, लैंग्वेज से। लैंग्वेज में भी हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, उर्दू, संस्कृत, any, it may be anyone, and is actually called verbal linguistic intelligence. तो इस verbal linguistic intelligence में देखते हैं हम कि कोई बच्चा है, वह हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत के क्लास में उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, उसकी रीडिंग अच्छी है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, या आपको बेहतर करना है, और इसके साथ ही साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी वोकैबुलरी है, उसकी बोलने की जो स्टाइल है, वो बोलने का जो तरीका है, खड़ा होने का जो पोस्चर है, एवरीथिंग सूटेबल है। क्योंकि वही अगर वैसे इंटरेस्ट किसी बच्चे को साहित्य में है, हिंदी में है, और ज्यादा रुचि अन्य बच्चों से दिखाता है, तब आप समझ जाएंगे कि वो बच्चा आगे चलकर क्या बन सकता है। जिसकी रुचि निबंध में हो, कुछ लेखनी में हो, और बहुत सारे एक्टिविटीज अगर आप विद्यालय में या क्लास में अपने विषय से सिलसिलेवार हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश हो, उर्दू हो, आप अगर उसमें करवाते हैं तो आप देखेंगे कि वह बच्चा का करियर क्या बन रहा है। इट इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स with words and understand what is described in word। बोलता है ये लैंग्वेज स्किल ऐसी स्किल है कि वो हमें विचारों को इस प्रकार हम व्यक्त करते हैं। इसीलिए कोई टीचर जो है हिंदी के टीचर है, वह जो, अब मेरा प्रश्न होता है कि मैंने सेशन के पहले ही कहा था कि कोई अगर शिक्षक या शिक्षिका हिंदी के टीचर है, वो मैथ्स के टीचर क्यों नहीं है? तो इसका कारण यह है कि जो अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल इंटेलिजेंस, उनकी रुचि जो है, ज्यादा रुझान जो है इंटेलिजेंस का, परसेंटेज जो है वो हिंदी के प्रति ज्यादा रही है, जिसके कारण वह हिंदी के शिक्षक या शिक्षिका हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अन्य विषय में उनकी रुचि नहीं है, हो सकती है कि उनकी अन्य विषय में रुचि हो, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ अदर सब्जेक्ट, दूसरे विषयों की तुलना में उनकी रुचि जो है ज्यादा है।
We are a human being, and animals are also survive, and we are also survive. They have also brain, we have also brain. What is the difference between the two? बोलते हम इंसान हैं, जानवर भी हैं, जानवर भी रहते हैं, इंसान भी इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? उनके पास भी दिमाग है, मेरे पास भी दिमाग है। ये कारण सिर्फ ये है कि we have a developed brains, हम लोगों का विकसित दिमाग है। आप देखे होंगे बगुले को, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस प्रकार का दिमाग उसमें है। आप एक उल्लू को देखिए, आउल को, तब आप समझ जाएंगे कि उसके पास किस प्रकार की दिमाग है। साधारण सी चिंचाने वाली कौवा और कोयल का उदाहरण ले लीजिए। कोयल के पास किस प्रकार की सेंस ऑफ ह्यूमर है, कि जो अपने बच्चे को, उसके अंडे को कौन पालता है। तो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? इंटेलिजेंस है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है। तो हर प्राणी में, हर जंतु में एक खास या विशिष्ट प्रकार का इंटेलिजेंस ईश्वर प्रदत्त है, और बहुत सारे इंटेलिजेंस जो है ये हमें समाज सिखाता है। हम इसे वो तो विद्या के माध्यम से स्कूल में सीखते हैं, पड़ोस में सीखते हैं, और समाज से सीखते हैं। तो हम जिस यहाँ पर इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं वह भगवत इंटेलिजेंस है। इट इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स विद वर्ड्स एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। People who have high level of verbal intelligence have a good composition and presentation skill. जिन व्यक्तियों के हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस होते हैं, वह क्या होते हैं? वह कंपोजिशन में बेहतर होते हैं, प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे उदाहरण जो दूंगा वर्बल इंटेलिजेंस की, आप वर्बल इंटेलिजेंस और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होने के कारण विलियम शेक्सपियर का देते हैं। उसके बाद आप चार्ल्स डिकेंस को देख लें, मार्टिन लूथर किंग को देख लें, माया एंजेलो को देख लें। दीज आर अ फ्यू ऑफ देम आई हैव गिवन। यहाँ पर देखिए, अगर जिस व्यक्ति, जिस स्टूडेंट में क्लास में वर्बल इंटेलिजेंस बेहतर है, वह क्या कर सकते हैं? उनका करियर राइटर बन सकते हैं। वो क्या बन सकते हैं? एक पोएट बन सकते हैं, एक अच्छा राजनीतिक बन सकते हैं, लिंग्विस्टिक बन सकते हैं, कॉपी राइटर बन सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं। इसके अलावा वह जो है, ये सिर्फ एक विषय के लिए नहीं, वह हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सभी अन्य भाषाओं के लिए यह विपरीत है कि वह उस फील्ड में बन सकते हैं। जैसे मैं अब राजनाथ सिंह का उदाहरण देता हूँ। आज राजनाथ सिंह आप देख रहे हैं किस पद पर सुशोभित है। तब आप जब ध्यान से देखेंगे राजनाथ सिंह की अगर बायोग्राफी को पढ़ते हैं तो ही वाज हिमसेल्फ अ टीचर एट अ सर्टेन टाइम। आप देख लीजिए वाजपेयी की बायोग्राफी को देख लीजिए, एक समय वह टीचर थे। आप अगर देखते हैं और अन्य व्यक्तियों को, जैसे हम टीचर्स डे मनाते हैं और उस समय हम किसको श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वह भी एक समय टीचर थे। हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उदाहरण लेते हैं। आप देखिए कि उनका प्राथमिक जीवन कैसे था? शिक्षक। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो थे वह शिक्षक बने हैं, और शिक्षक बनने के बाद अपने जीवन के अगले पीढ़ी में या उसके उपरांत दूसरे पद को या आयाम पर पहुंचे। तो ये था हमारा वर्बल इंटेलिजेंस। तो छात्रों में वर्बल इंटेलिजेंस की पहचान करना लैंग्वेज टीचर का काम होता है, और लैंग्वेज टीचर अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के प्रतिभा किन-किन बच्चों में है, और इसी से बेस्ड आपको एक्टिविटीज भी करानी होगी। बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो मैंने कहा, रीडिंग कंपोजिशन, राइटिंग, क्विज करा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डिक्टेशन करा सकते हैं, ड्रामा करा सकते हैं, प्ले करा सकते हैं, और कुछ आउटडोर गेम्स भी करा सकते हैं। उसे ऐसे कंपोजिशन करा सकते हैं। उसके बाद आप उन्हें एक अच्छा स्पीकर भी बना सकते हैं ताकि वो भविष्य में एक अच्छा स्पीकर बन सके। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम वर्बल इंटेलिजेंस के अंतर्गत देखते हैं। अब मैं आ रहा हूं दूसरी इंटेलिजेंस की, जो बात मैं कर रहा हूं वह विजुअल या स्पैटियल है। विजुअल का मतलब क्या? देखकर, यानी जिस वस्तु को हम देखकर। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट बनता है उसी का एग्जिस्टेंस है। ये हमें साइंस सिखाता है कि जिस वस्तु की ऑब्जेक्ट है उसी का एग्जिस्टेंस है। तो वो ऑब्जेक्ट जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। विजुअल की मतलब मैं बात करता हूं, यानी एबिलिटी टू परसीव द विजुअल, मतलब देखकर किसी चीज को ग्रहण करना।
So these learners tend to think in a pictures and need to create vivid mental images to retain information. यानी हम पिक्चर कंपोजिशन जब कराते हैं, एक पिक्चर जो है हजारों चीजें लाखों चीजें बोल देती है। अगर कभी पिक्चर के माध्यम से, इमेज के माध्यम से जो सूचना बच्चों को प्राप्त होती है और उसी के माध्यम से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको जो डिलीवर करते हैं वह विजुअलाइज में आता है। इसके लिए हम देखेंगे दे एंजॉय, जैसे मैप्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिविटीज में अपने क्लास में, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस के टीचर कर सकते हैं, चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूवीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सब चीजें हम विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको वर्बल लिंग्विस्टिक के बारे में बता दिया कि वर्बल लिंग्विस्टिक क्या था, तो एबिलिटी टू यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज। उसके बाद जो था लॉजिकल मैथमेटिकल, तो लॉजिकल और मैथमेटिकल में क्या है हम लोग देखेंगे कि ये जो एबिलिटी टू यूज रीजन, जिसमें रीजन होता है, जो कैलकुलेशन में एक्सपर्ट है, इंटरेस्ट है उसकी, ऑरली कर सकता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है जिसके पास, वो रीजन, लॉजिक और नंबर को उसका शौक होता है। तो ऐसे प्रकृति के बच्चे लॉजिकल होते हैं, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होती है, हो सकता है कि वो मैथ में बहुत अच्छे हों अन्य विषयों की तुलना में, और अन्य विषय में उतने बेहतर ना हो। तो एबिलिटी टू यूज रीजन, लॉजिक एंड नंबर, एंड दीज लर्नर्स थिंक कॉन्सेप्चुअलिटी और कॉन्सेप्चुअली इन लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल पैटर्न। इस लॉजिकल पैटर्न्स का मैंने उदाहरण दिया कि मिनियासोटा में एक जेल में एक बंदा था, कैसे अपना लॉजिक यूज किया। हमारे आदरणीय श्री मधुकर जी ने लॉजिकल थिंकिंग का उदाहरण बहुत अच्छे तरीके से दिया, किस प्रकार लॉजिकल थिंकिंग का यूज करना चाहिए। लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल पैटर्न मेकिंग कनेक्शन बिटवीन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे इससे हम एक रिलेट करके इससे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीजें थी जो मैंने कहा। आई विल रिक्वेस्ट, मैं हमारे आदरणीय नवयुवक शिक्षक को निवेदन करूंगा कि आप कैमरा को कृपया उस तरफ ले जाएं और सभी शिक्षक कृपया उस तरफ हो जाएं ताकि मैं कुछ बातें आपको बता सकूं। So first of all, I will request all our respected mentors and teachers, please look at this picture seriously and try to understand from here. So you can look at this picture. Here it is given poster. You can understand it. From the different pictures, you will illustrate something. Here spatial is given. Here finding is something. Linguistic is given. Here naturalist is given. Musical is given. Then intrapersonal is given. Then interpersonal is also there. Sensing peoples is there. Then logical mathematical is also given. So 1, 2, 3, 4, then 5, 6, 7, 8. Please look at this. First one is a spatial. Spatial means visualizing the world. Means once I have already told you and explained it about the spatial. Look at this picture. Then finding the right words to express what you mean. What will you say? Linguistic word, which I have already discussed. Then the naturalist understanding living things, reading nature. Means one who is close to nature, one who knows, well acquainted with the nature in comparison of the others. Naturalist one. Then musical, I have already given its examples. One of our respected sir sang a song also, and he has given an important message through it also. Musical, that is describing sound, pitch, tone, rhythm and timbre. These were a few things or parameters we used to measure, evaluate. Then here intrapersonal means understanding yourself, what you feel. That I am going to explain in a broad way. Then sensing people's feeling and motives. And logical, mathematical, I also told it, quantifying things, making hypotheses and proving them. Now
look at over here. This is the coordinating your mind with your body. It is very necessary to coordinate the mind with the body, and this is known as the kinesthetic ones. Here are few quotes I have also written for share to our respected teachers, that everybody is a genius. Everybody is genius in this world, but you judge a fish by its ability to climb a tree. It will live its whole life believing that it is stupid. एक प्रसंग बोलकर आपको समझाना चाहूंगा कि एक ताड़ का वृक्ष आकार में लंबाई में बहुत ऊंचा होता है और उसकी बहुत कम शाखाएं होती है। अगर मैं चाहूं कि आम आदमी, साधारण आदमी उस ताड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने क्लांत को, अपनी थकावट को दूर कर ले और उस फल से फल प्राप्त कर अपनी भूख को मिटा ले, तो यह बेवकूफी ही होगा। इसके प्रसंग में एक लाइन भी है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। उसके बाद की लाइन क्या है मैडम? पक्षी को छाया नहीं, फल आ गया तो आप उसका उदाहरण ले सकते हैं, एक प्रासंगिक उदाहरण है, उसके माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं कि एवरीबॉडी इज यूनिक। आप बिल्कुल यूनिक हैं। आपने देखा है कि हर की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जिसका हमारे खुर्शीद सर ने बहुत अच्छी बात कहा कि ईश्वर जो है एक अनुपम आर्किटेक्चर है और उन्होंने सबका निर्माण जो है एक बहुत खास विशिष्ट क्वालिटी के साथ इस धरातल में भेजे हैं। अब उस व्यक्ति को अपनी उस क्वालिटी को समझकर और बच्चों को वह क्वालिटी को, उनके अंदर हिडन क्वालिटी को समझाकर उन्हें आगे की ओर मार्ग प्रशस्त करना ही हमारा परम कर्तव्य है। The area in which parents excel is in providing a learning environment. A learning environment is simply one which makes learning possible. Anything that is worth teaching can be presented in many different ways, and these multiple ways can make use of our multiple intelligence. एक ही वस्तु को पढ़ाने, बोलने और लिखाने, समझाने का बहुत तरीका होता है और उस बहुत विकल्पी तरीका को, मल्टीपल इंटेलिजेंस का, हम लोगों को प्रयोग करके कक्षा में अपने बच्चों के साथ एक ऐसा वातावरण तैयार करना है, बच्चों की मानसिक मनोदशा को समझते हुए और बहुत सारी बातों को समझते हुए हमारे शिक्षण को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आने वाला समय जो है सबसे कठिन कार्य अगर है तो शिक्षण का होने वाला है और वही व्यक्ति इस संसार में सरवाइव करेगा, इस संस्था में, शिक्षण संस्था में सरवाइव करेगा, जो अपने आप को समय के अनुकूल बदलने में सक्षम होगा। जिस व्यक्ति में यह क्वालिटी आ जाएगी कि मुझे सीखना है, हमें समय के साथ चलना है, और इसीलिए हम लोग को हमारे सीओ आर पटना को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हर सीबीएसई विद्यालय में इन्होंने केवल बिहार राज्य के नहीं, भारतवर्ष के, समस्त भारतवर्ष में सीबीएसई के साथ साथ विदेशों में भी जहाँ सीबीएसई की पढ़ाई होती है वहाँ उन्होंने इस प्रकार के ट्रेनिंग का प्रावधान करके सभी शिक्षकों को बेहतर बनाने का एक सुनहरा अवसर दिया है और इसी अवसर में हम लोगों को कुछ अच्छा सीखकर बेहतर कर आगे बढ़ना है। Much of the material presented in school strikes students as alien if not pointless. बोलता है कि हमारे पास पुस्तकी है, सामग्री बहुत सारे हैं, मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन हमें उसे परोसना नहीं आता है, हमें डिलीवर करना नहीं आता है, हमें बच्चे के माइंड के अनुसार चलना नहीं आता है, तो बहुत निरर्थक होगा। इससे कोई हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार एक मैं और एग्जांपल साधारण देता हूं ताकि आप बेहतर समझें। आप किसी के घर में अतिथि के रूप में जाते हैं, आपको बहुत अच्छे तरह डिलीशियस डिशेस को आपको एक गंदे थाल पर परोसा जाता है। उनका सर्व करने का तरीका इतना गंदा होता है जो एक मेड का भी नहीं होता है। क्या आप उस पात्र से स्वादिष्ट भोजन को अपने हाथ से उठाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। इन द सेम वे, अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन अगर उसको ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है, बच्चों की मानसिक दशा अवस्था को समझकर आगे बढ़ने की अगर आप में वह क्षमता नहीं, तो यह निरर्थक साबित होगा। धन्यवाद। मैं पुनः आप लोगों को निवेदन करूंगा कि आप पूर्व स्थिति में बैठ जाएं ताकि मैं इस विषय को रैप अप करूं और
तो आप लोगों ने देखा कि बहुत तरह के जो मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं वह क्या क्या है। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस कैसा इंटेलिजेंस है? तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है, जब मैं बोला था ना कि सर बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, तो यहाँ मैंने आपको ध्यान देने के लिए कहा था, फोकस करने के लिए कहा था। तभी आप देखेंगे यू आर लेट, द स्टूडेंट्स आर डूइंग लाइक दैट। व्हाई? Because he or she possesses musical intelligence. It means musical intelligence is a type of intelligence, also called musical rhythmic intelligence, which is related to high sensitivity to sound and music found in nature. It is a person's ability to interpret, combine, manipulate sounds. Children with musical intelligence generally also have an auditory learning style. अब बहुत सारे उदाहरण हैं, इसका हम दे सकते हैं कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आए हैं। तो पॉल मैककार्टनी का एग्जांपल दे सकते हैं, मार्टिन का एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं उसका देख सकते हैं। तो यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो बजाता है उसमें भी एक्सेलेंट स्टूडेंट रिगार्डेड हो सकता है। और उसके करियर क्या हो सकते हैं, हम कैसे पता चलेगा? तो म्यूजिशियन बन सकते हैं, कंपोजर बन सकते हैं, कंडक्टर बन सकते हैं, पियानो ट्यूनर बन सकते हैं, म्यूजिक थेरेपिस्ट बन सकते हैं, कोरल डायरेक्टर बन सकते हैं और म्यूजिक टीचर बन सकते हैं। हर विद्यालय में म्यूजिक टीचर उपलब्ध है। तो ये चीजें थी हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे कई तरह के काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हैं और विभिन्न तरह के इंटेलिजेंस से हमें क्या प्राप्त होता है और बच्चे क्या सीखते हैं इनसे। यानी इंटेलिजेंस की आप मान लीजिए कि मैं एग्जांपल आपको नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस का दे रहा हूं। तो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस क्या है? तो एक किसान, एक व्यक्ति जो गांव में रहता है, वह गांव से जुड़ा होता है, वह नेचर से जुड़ा रहता है, पहाड़ से जुड़ा रहता है, जंगल से जुड़ा रहता है। यानी नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है? नेचुरल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू इंटरप्रेट नेचर and is also called naturalistic intelligence. जो नेचर से जुड़ा हुआ है, तो जो व्यक्ति नेचर से जुड़े रहेंगे, यानी आप देखेंगे कि एक एग्जांपल देता हूँ, चार्ल्स डार्विन है, रैचल कैर्सन है, जॉन बुइर है। तो इसमें करियर क्या पता चलता है? आप इसको विद्यालय में देख सकते हैं, एसएसटी के टीचर पहचान सकते हैं कि बच्चे को नेचर के प्रति नॉलेज है या नहीं। एक गांव के व्यक्ति और एक शहर के व्यक्ति को आप कंपैरिजन में ले सकते हैं, आप पा जाएंगे कि फार्मर्स को नेचर के बारे में कितना नॉलेज है। एक जो इन्हें नेचर के प्रति जिनकी रुझान होती है, रुचि होती है, वह फार्मर बन सकते हैं, बोटैनिस्ट बन सकते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं, कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं और बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल और दो चीजें हैं, इंट्रापर्सनल। आप इसमें पकड़ नहीं होंगे कि इंटरपर्सनल क्या होता है और इंट्रापर्सनल क्या होती है। तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रापर्सनल को बताऊंगा। जैसे आप जानते हैं इंटरनेट एंड इंट्रानेट, आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। जब मैं एमएससी विप्रो में था तो हम लोग इंट्रानेट यूज करते थे। इंट्रानेट इंटरनेट की तरह ही है, लेकिन एक सर्कल में काम करता है। जैसे विप्रो के लिए मैं काम करता था तो इंट्रानेट, जहां जहां विप्रो भारतवर्ष में है वहां पर इंट्रानेट काम करता था। एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो काम करती थी, वो इंट्रानेट। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इंटरनेट काम करती थी। और जब हम इंटरनेट बात करते हैं तो इंटरनेट सबको यूज करता है। ये बेसिक डिफरेंस है। इसी तरह इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है कि ऐसा इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू नो oneself well and to make this knowledge useful। ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान को जानता है और उसे सुधार भी करता है। और this type of intelligence can help a person focus on planning and managing their life। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं इंट्रापर्सनल जिसमें होता है, वो अपने लाइफ को प्लानिंग करते हैं, मैनेज करते हैं। इस तरह के जो लोग हैं, सोक्रेटिस का उदाहरण दे सकते हैं, सिगमंड फ्रॉइड का उदाहरण दे सकते हैं, जिनमें इंट्रापर्सनल। अब कुछ एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल क्या? जिसका अस्तित्व है,
Another type of intelligence है that has been studied and added to the multiple intelligence. Later, theory is existential. मतलब जिसका अस्तित्व है उसे हम existential कहते हैं. अब इस तरह के जो बच्चे होते हैं उसकी फीचर क्या होती है? तो those who use this existential intelligence well are capable of interpreting. वह इंटरप्रेटिंग में कैपेबल होते हैं, एक्सप्लेनिंग में कैपेबल होते हैं, प्रेजेंटिंग में कैपेबल होते हैं, कंसेप्ट उनकी अच्छी होती है. ऐसे एग्जांपल हम करेंगे, महात्मा गांधी की बात करेंगे, अब राम रहीम वाले साधु की बात नहीं करेंगे कि उनमें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है, बिल्कुल नहीं. हम बोलना चाहते हैं बुद्ध ऐसे व्यक्ति को, हम बोलना चाहते हैं सोक्रेट्स को, हम बोलना चाहते हैं जीन पॉल सेटायर को. तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्टूडेंट जिनमें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस पाए जाते हैं उनका करियर होता है मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, हर स्कूल में है. योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, हर स्कूल में है. फिजिक्स बन सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं, पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, फिलोसोफर बन सकते हैं. तो इस तरह के व्यक्ति जो हैं. अब मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की मैं पहले ही बात कर दिया हूं कि जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है उनकी एबिलिटी होती है कि नंबर को यूज करना, सिंबल इफेक्टिव यूज करना, क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट. जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट यूज करते हैं मैथ्स में एंड अप्लाई गुड रीजनिंग की आवश्यकता होती है. इट इज आल्सो कॉल्ड लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस. और आपको पता ही है कि जो मैथ्स में इंटरेस्ट होगी वह क्या क्या काम कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करूंगा कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है. तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? तो इंटरपर्सनल एबिलिटी टू सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बी अवेयर ऑफ ओन्स इनर स्टेट ऑफ बीइंग. जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की एबिलिटी है वह आप कीजिएगा, जो जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की एबिलिटी होती है वह इंट्रापर्सनल कहलाता है. इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वह होता है यानी एबिलिटी टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड अदर्स इज कॉल्ड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. एंड दीज लर्नर्स ट्राई टू यूज थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसे लोग दूसरे लोगों से सीखते हैं in order to understand how they think and feel, कि कैसे वह सोचते हैं, कैसा अनुभव करते हैं. ऐसे लोग जो होते हैं जनरली दे मेंटेन पीस इन ग्रुप, setting the encourages cooperation और they use both verbal यानी स्पीकिंग एंड नॉन वर्बल लैंग्वेजेस. आई कांटेक्ट यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं टू ओपन कम्युनिकेट चैनल्स विद अदर्स. तो आपने देखा कि इंटरपर्सनल क्या है, इंट्रापर्सनल क्या है, म्यूजिक इंटेलिजेंस यानी रिदमिक इंटेलिजेंस क्या है. अब एक सिर्फ बात है बॉडीली इंटेलिजेंस यानी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. यानी आपने देखा कि बॉडी मूवमेंट करने वाले जो बेटर होते हैं वह क्या होता है. क्लास में भी देखेंगे वो अच्छा एक्टर बन सकते हैं, स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं. तो जी बिल्कुल सही. तो एबिलिटी टू कैसा, एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, अच्छा डांसर बन सकते हैं. तो एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट जो एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली, जो बॉडी मूवमेंट बेहतर करते हैं और ऑब्जेक्ट को स्किलफुली हैंडल करते हैं वे बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आता है. और ऐसे बच्चे आपको वर्ग में मिलेंगे, हर वर्ग में मिलेंगे. एंड दीज लर्नर्स एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू मूवमेंट. और ये मूवमेंट से सीखते हैं. दे हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड आई हैंड और कोऑर्डिनेशन. जैसे बॉल प्ले हो गया, बैलेंसिंग बीम्स हो गए, थ्रू इंटरैक्टिंग विद द स्पेस अराउंड देम एंड दे आर एबल टू रिमेंबर प्रोसेस इंफॉर्मेशन. और आपने मैथमेटिकल भी देखा, वर्बल भी देखा, सभी ये जो हमारे आयाम थे 9 स्टेप था, ये 9 स्टेप के बारे में समझा हम लोग. अब इस ऐसे अंत समय पर आ गए हैं कि इस सेशन की समाप्ति की जाए. इस सेशन की समाप्ति के पहले मैं हमारे सभी आदरणीय शिक्षक और शिक्षिकाओं से निवेदन करूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस सेशन में बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत धैर्य के साथ दिया और अपने विचारों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से, अपने अनुभव को
विद्यालय के अन्य सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ साझा किया और मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपके शिक्षण प्रणाली में पठन पाठन की प्रक्रिया में बेहतर साबित होगा और इन सभी मल्टीपल इंटेलिजेंस के पहलुओं पर आप ध्यान से विचार करके अपने लेसन प्लान तैयार करके अपने कक्षा में जाएंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आप लोग इतने धैर्य के साथ एक बहुमूल्य ऐसे टॉपिक जिसका न ही केवल बच्चों को बल्कि शिक्षकों को बहुत आवश्यक है अपनी प्रतिभा को पहचानना और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अच्छे भविष्य और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना, ये हर शिक्षक का उत्तरदायित्व है, क्योंकि संसार में ऐसे कार्य में आप संलग्न हैं जो बहुत ही नॉवल प्रोफेशन में आता है। दो ही प्रोफेशन सभी प्रोफेशन नॉवल हैं, लेकिन उनमें से जो बहुत अत्यधिक जिम्मेदारी वाला कार्य है, डॉक्टर के पेशे के बाद अगर संसार में कोई किसी को विश्वास करता है तो वह आपका स्थान है, आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थान है जो हमेशा प्रेरित रहेगा। शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, इसका कोई विनिमय नहीं चुका सकता, लेकिन इस संस्थान किसी भी संस्थान में अपने आप को बेहतर करने के लिए आपको स्किलफुली आगे बढ़ता रहना होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज की सेशन की समाप्ति करता हूँ। मुझे उम्मीद है इस सेशन के माध्यम से आप जानी गए बहुत सारी चीज़ों को जो साझा किया गया उसको अपने प्रतिदिन के शिक्षण कार्यवली में इसे सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।